चलो असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं हम. Let's take a look at the doubts. We have assertion reason में doubts है. Carbon forms covalent compound with chlorine to form CCl4. That is true. Carbon has 4 valence electrons. Okay, valency 4. Chlorine has 7 valence electrons. Valency 1. I mean, I know what you're thinking. This is really, this is, I think ये A होगा, but I do not completely agree because ये covalency होती है. तो वो तो कोई बात नहीं, but probably they'll give you the answer A here. Covalency इसलिए because it cannot really lose or gain electrons, it can only share. So that's the reason it is forming covalent bonds with it. Anyways, but it's fine. A ही होगा. Carbon forms very large number of compounds. Yeah, that is due to the property of catenation and tetravalency. तो इसका भी यही होगा. हाँ. Okay. Now, why are covalent compounds co-conducted of electricity? Now, since there are no free electrons, ये तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो स्पेशल केस हो गया ना. जनरली कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट एक स्पेशल केस है. और एनीवे वो कार्बन मतलब कंपाउंड तो नहीं है एक्चुअली, वो तो मतलब एलिमेंट ही है सीधा. मतलब कार्बन के साथ कुछ थोड़ी हो, तो प्योर कार्बन है. बट एनीवे प्योर कार्बन विल आल्सो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट देर आर सिंस देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, it will not conduct electricity. Now, since this is a very short, you can write this. If this was a 2 marker, you'll explain why are the conductors good conductors, because they have free electrons in them. फॉर एग्जाम्पल आयंस, तो जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्योंकि उनमें आयंस होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं. और तुमने ये भी पढ़ा था कि वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मोल्टन फॉर्म में कर सकते हैं. And that is a very, very important distinction between something being an ionic compound and something being a conductor in solid form, for example, metals. So metals will conduct in solid form, liquid form, or if you manage to get them to gaseous state, yes, gaseous form. They have free electrons to do that. But what happens is for these yeah. What happens is for ionic compounds, they don't really have in their structure to conduct electricity when they are in solid forms. What happens is when they are in molten form, which is liquid form, or in aqueous solutions, that is when they dissociate into ions. And that is when they can conduct electricity. So a lot of times हम इसलिए acids की भी वही बात करते हैं, और acids भी हम तभी बोलते हैं. In fact, the solid version of an acid or the dry version would not really be an acid. तो मतलब it does not show any properties of acid. So acid is named after its properties and it will not be acid अगर वो solid form में है. तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक गैस, अगर अगर हाइड्रो जो हमने हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा हुआ है ना HCl, तो HCl will not really conduct electricity in solid state or dry gaseous state. मतलब so it has to be the molten or one of the things. And how it what's the exact reason of it is far more complicated to our level. So we just generalize it to understand कि वो बस नहीं कर सकते, उसमें आयंस फ्री नहीं होते हैं. बट वी नो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लाइक मतलब कैरियर्स ऑफ करंट के, मतलब हाँ इधर से उछल के उधर जा रहे नहीं. सो मतलब इट्स नॉट लॉट मोर डिफरेंट देन दैट, बट इट्स better if we understood it this way, because how it really works is a lot more complicated. Anyways, the next question, covalent compounds have really low melting and boiling points because their intramolecular forces of attraction are weak. Okay, so they have weak intramolecular forces of attraction. कि मतलब एक कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. फॉर एग्जांपल लेट्स से जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेट्स से ये O2 है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, मैं अभी इंट्रामोलिक्यूलर की बात कर रहा हूँ. इंटरमोलिक्यूलर स्ट्रांग होते हैं कोवेलेंट के, इंट्रामोलिक्यूलर वीक होते हैं. ना 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 ना, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब होता है, एक सेकेंड,
हाँ सही कह रहा है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर आएगा, आपस में मॉलिक्यूल्स का वीक होता है, बट इनसाइड द मॉलिक्यूल इट इज स्ट्रॉन्गर, सो इंटरमॉलिक्यूलर आएगा। जो हम बात करते थे ना बचपन में, नाइन्थ में हमने सीखा था कि अगर सॉलिड लिक्विड गैस बनते ही कैसे हैं? तो बिकॉज लिक्विड्स में या गैसेस में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो गैसियस स्टेट में होता है। दैट इज द रीजन अ लॉट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैस इन गैसियस स्टेट, अ लॉट ऑफ देम आर बिकॉज देर ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अनलाइक द आयनिक बॉन्ड जो एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ऑल्सो यू माइट थिंक कि सर अगर ऐसा तो चलो कंपाउंड में हो रहा है, व्हाट अबाउट एलिमेंट्स की, मतलब एक अभी तो हाँ हाँ वो तो सही बात है। और दूसरी बात, इफ यू थिंक अबाउट इट, जब हम एक सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं और उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसके अंदर कैसे है, उसको हम लैटिस बोलते हैं। ठीक है, कि वो किस तरीके से अरेंज्ड है उसके अंदर, एंड यू वुड सी अ लॉट ऑफ, और जैसे मेटल को देखा ना तुमने बेंड होते हुए, बिकॉज इवन मेटल हैज स्पेसेस बिटवीन देम, so it's not really it has a lot of empty spaces in between. Some things are, when things are compressible, they displace and then that shape, I know it looks shiny to us, but nothing actually is perfectly smooth, you understand? Nothing in this real idealistic world can have zero friction. It just cannot. Nothing can be frictionless. हाँ मतलब अगर frictionless मिल जाए तो क्या ही बात है, but नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। So nothing can be, because calling something flat would ask you a simple question: are the molecules flat? Not really. So if the molecules are not flat, how can the surface become flat? Yes, you can make them as smooth as possible. मतलब ह्यूमनली हमें मिरर्स जैसा दिखेगा। ऑल्सो मिरर्स कुछ भी ऐसी चीज बन जाते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, तो इट डज नॉट नेसेसरी हैव टू बी अ सिलिकॉन कोटिंग बिहाइंड इट। मैं मतलब तुम्हारे चेहरे को भी चमका दूं सैंड पेपर से, इट इज नॉट पॉसिबल, बट लेट्स जस्ट से, तो तुम भी मिरर बन जाओगे। ठीक है, सो एनीथिंग विद इनफ व्हाट डू यू से, यू make them smooth enough and they'll become a very close to a mirror. That's why new articles you will see कि सारे चमकते रहते हैं, गाड़ियां, किचन के नौ, whatever. Anyways, moving on. Compare the ability of catenation of carbon and silicon. Silicon has a lot less ability for catenation than carbon. Now, what was catenation? If do you remember? Long chains form करना. Carbon pass होता है. Exactly. The thing मतलब कार्बन में जो ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, और देन इसके बाहर वाले चार जो है ये शेयर्ड है, तो ये भी ये शेयर्ड है। यार उसके भाई ये भी तो समझो ना, उसका सेंटर का चार्ज भी तो होना चाहिए कुछ, जो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, और ये भी शेयर्ड है। नाउ दे आर वेरी क्लोज to the nucleus, due to which, since they are close to the nucleus, they can actually be very strongly held on by the carbon atom. So ये बहुत ही अच्छे से attracted है towards the carbon atom. On the other hand, silicon, if you should know about silicon, कि वो क्या है, पहले शेल में दो, नेक्स्ट शेल में 1 2 शेल्स बनाता ना, मतलब दिखेगा ही नहीं कहाँ बना। So let's just make shells. Silicon on the other hand, इसमें जो शेड होते हैं ना, ये लास्ट शेल में होते हैं, which makes this या न्यूक्लियर चार्ज बहुत है इसका भी, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इसका भी बहुत है, लेकिन सिंस जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज वेरी वेरी फार अवे, 1 2 3 4 5 6 7 8, and these ones are pretty far away, 1 2 3 and 4. So the bonds that it forms are not really that strong जितने कार्बन के। ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, but that force is much greater than this force. ठीक है, so this is the primary reason why you have catenation ability in carbon to that degree. It's lies in the perfect spot, ये मतलब not too much, not too little.